हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने बिगनर्स के हवाले से लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 को डिस्कस किया और अब हम बिगनर्स को प्रीपोजिशंस ऑन और इन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्रीपोजिशन ऑन, जिसके माने पर या ऊपर के होते हैं, उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब हम किसी चीज़ की सरफेस पर यानी किसी चीज़ की सतह पर किसी चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करते हों। और जैसे कि द मैप ब्लैंक द वॉल। अब वॉल के अंदर तो हो नहीं सकती कोई चीज़, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। द मैप इज़ ऑन द वॉल। बिल्कुल इसी तरह हम इन का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज़ की मौजूदगी किसी जगह के अंदर या में के यूजेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ऑन जो है वो किसी चीज़ की सतह पर अगर कोई चीज़ मौजूद है तो प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इन जो है वो 4 साइड्स कवर या एटलीस्ट 3 साइड्स कवर किसी जगह के लिए किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो तो फिर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द कीज़ ब्लैंक द डोर, तो इसमें हम इन का इस्तेमाल करेंगे। द कीज़ आर इन द डोर, क्योंकि दरवाज़े के ऊपर तो कीज़ होंगी नहीं, दरवाज़े के अंदर कीज़ होंगी, तो हम कहेंगे द कीज़ आर इन द डोर। तो सेंटेंसेस हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके यूजेज को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको ऑन और इन का ये सिंपल सा यूजेज समझ में आ गया होगा। और अब हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि ऑन के माने पर या ऊपर और इन के माने के अंदर या में के होते हैं। तो इसका सबसे पहला सेंटेंस है मिस्टर ली इज़ ब्लैंक द रूम। हमें इन या ऑन में से किसी एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस को दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। मिस्टर ली इज़ ब्लैंक द रूम, ऑन या इन। यकीनन इसमें इन का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि कमरे के अंदर हमने कहना है, ना कि कमरे के ऊपर कहना है। तो हमारा राइट आंसर होगा मिस्टर ली इज़ इन द रूम। सेंटेंस नंबर 2 देखिए। द नेम इज़ ब्लैंक द डोर। द नेम इज़ ब्लैंक द डोर, ऑन और इन। यकीनन इसका सही आंसर होगा ऑन। द नेम इज़ ऑन द डोर, क्योंकि नाम जो है वो दरवाजे के ऊपर है, ना कि दरवाजे के अंदर है। नंबर 3, द पेन्स आर ब्लैंक द डेस्क। द पेन्स आर ब्लैंक द डेस्क, ऑन या इन। दोस्तों, हमने डेस्क के बारे में डिस्कस किया था कि डेस्क एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक ऐसी टेबल को, एक ऐसी जगह को कहते हैं जिसमें रखने के लिए कोई कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर द पेन्स आर ऑन द डेस्क से ज़्यादा बेहतर होगा द पेन्स आर इन द डेस्क। इन इज़ द राइट आंसर। सेंटेंस नंबर 4, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल। टेबल जिसमें नीचे रखने की कोई जगह नहीं होती, उसके अंदर कोई चीज़ रखी नहीं जा सकती है। तो अब बताइए इसमें ऑन का इस्तेमाल करेंगे या इन का? जी, ऑन।
The book is on the table. Sentence number 5. The pages are blank the book. The pages are blank the book. In or on? Yes, in the book. The pages are in the book is the right answer. Sentence number 6. The alphabet is blank page 4. The alphabet is blank page 4. On page 4 या in page 4? On or in? Yes, on is the right answer. The alphabet is on page 4. Sentence number 7. The table is blank the corner. The table is blank the corner. On or in? Yes, the table is in the corner. Number 8. The calendar is blank the wall. On or in? Yes, the calendar is on the wall. Number 9. The words are blank the board. The words are blank the board. On the board or in the board? Yes, you are absolutely right. On the board. The words are on the board. Number 10. The chairs are blank the floor. The chairs are blank the floor. In the floor or on the floor? Yes, on the floor. The chairs are on the floor. दोस्तों उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन के इस यूजेज के बारे में समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम ऑन और कहाँ प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑन और इन का जब भी आप इस्तेमाल करें तो याद रहे ऑन सरफेस के लिए यानी किसी चीज़ की सतह के ऊपर अगर कोई चीज़ मौजूद है तो ऑन, और अगर कोई चीज़ किसी जगह के में या के अंदर मौजूद है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।